Hi everyone, hope you all are doing well. Here I am with chapter number 2 of class 8th, and the name of the chapter is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. Class, we have already discussed about land, soil, water. Now in this video we'll discuss about natural vegetation. Let's have a look of sub part of natural vegetation here. Number 1, we'll discuss about the natural vegetation and its meaning, types and distribution of natural vegetation, and at last we'll study about forest and its grassland. Fine. So what is natural vegetation? Basically it's a group of plants which have developed in an area without human interference. फाइन. तो बेसिकली ये वो नेचुरल वेजिटेशन वो हैं जो अपने आप से ही ग्रो हो जाते हैं, इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट नेचुरल वेजिटेशन. फाइन. नाउ and the growth of the natural vegetation, they are largely depend on the variety of factors. जिस जो factors की हम बात करें, climate, relief, soil, precipitation. So we have different natural vegetations here. Let's have a look. We have three parts here of natural vegetation, that is forest, grasslands, desertic scrubs, and we have another name of the desertic scrubs, that we have shrubs. इसको हम shrubs भी बोलते हैं. Fine. So in this video we will discuss only about forest because these are so many, and later on we'll discuss about grasslands and desertic scrubs. Fine. So let me start with the forest. Number 1 हम बात करेंगे tropical evergreen forest की. ये कहाँ मिलते हैं? They are grown in the area near the equator, close to the tropics. Fine. And they are found in Amazon basin, Zaire basin, Vietnam and Indonesia. Clear? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम इन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं. फाइन. और दीज फॉरेस्ट रिक्वायर हॉट क्लाइमेट एंड अबंडेंट रेनफॉल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. ट्रीज आर टॉल एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो यहाँ के ट्रीज ऑलवेज ग्रीन रहते हैं. ब्राज़ील में इसको बोलते हैं सिल्वर्स, जिसका मतलब है लंग्स ऑफ द अर्थ. फाइन. Come to vegetation. Hardwood trees like ebony, mahogany and rosewood etc. are found these forest. In these forest, इनकी वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर होते हैं snakes, elephants, monkey and apes. इसका ये है एक वेराइटी एनिमल की जिसका हम नाम देते हैं apes. फाइन. नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. दीज आर फाउंड इन Northern Australia, Central America and in the large portion of India. Fine. Come to characteristics. These trees are affected by seasonal contrast of moisture and sun's heat. Fine. उनकी जो इनकी ट्रीज हैं वो अपनी शेड अपनी जो लीव्स हैं उनको बेसिकली झड़ जाती हैं लीव्स पेड़ों से in the dry season. So trees shed their leaves in the dry season. Trees have great economic value because woods of these trees are used for making furniture and transport equipment. Fine. इन फॉरेस्ट को हम अदर नेम भी देते हैं जिसका नाम है मॉनसून फॉरेस्ट. फाइन. नाउ इट्स अ वेजिटेशन ऑफ tropical deciduous forest. Hardwood trees like teaks, neem, sal, shisham, these are found in these forests. Come to wildlife. We are having here lion, tigers, elephant and langurs. Fine. So it is all about the wildlife of tropical deciduous forest. Now come to temperate evergreen forest. These are found in basically southeast Australia, southeast USA, southeast Brazil, south China, Japan, east and eastern Africa basically. Fine. Come to characteristics of these forests. These forests have both wood, soft wood भी होते हैं, hard wood भी होते हैं इनके trees की. And timber is usually found in these forests. It is extremely valuable. These forests are thick. Let's have a look. आप देख सकते हो ये बहुत घने होते हैं. इसकी वाइल्ड लाइफ की बात करो तो these forests are having sheep, cattle and pigs. Okay, and these are reared to get wool, meat and skin. Easy. Now come to temperate deciduous forest. These are found in northeast China, New Zealand, Japan, northeast China, and northeast USA, southern Chile, and in the western Europe. Now come to characteristics.
These leaves shed their basically these trees shed their leaves in winter season. Fine. And these have thick trunks and broad leaves. They require moderate temperature and rainfall. Fine. Here I have written something wrong. You can correct it, please. Sorry for that. Temperate, here temperature should be there, and sorry for that also. I have written again, it's a northeast China. 2 times I have written here. नेक्स्ट इसकी वाइल्ड लाइफ की बात करें, सॉरी पहले हम वेजिटेशन की बात करते हैं. तो यहाँ पर कौन कौन सी है नेचुरल वेजिटेशन, दैट इज़ मैपल ट्री, एस्पेन, ओक, फर्न्स, रेडवुड. फाइन. बुशेस, ये ओक, पाइन, विटल, ये सारे ही जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं. नेक्स्ट इसकी वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं. सो वी हैव हियर डियर, इस एनिमल को हम बोलते हैं बीवर्स. देन वॉल्व्स, फॉक्सेस. फाइन. बर्ड्स भी यहाँ पे मिलते हैं जिनका नाम है सम मोनल्स एंड फीजेंट्स. So these are the main birds of temperate deciduous forest. Fine. Now come to Mediterranean vegetation. These are found in southwest USA, southwest Africa, southwest and South America, southwest Australia, Italy, Spain, South France, Portugal, Greece. These are the some countries जहाँ पर ये natural vegetation आपको मिलेगी, Mediterranean vegetation मिलता है. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दीज आर फॉरेस्ट विच आर वेल ग्रोन इन द रीजन्स ऑफ ड्राई समर and wet winters. They have thick barks and wax coated leaves. These trees are also called orchard of the world. Fine. इसकी वेजिटेशन की बात करते हैं. यहाँ पर होते हैं मेनली citrus fruit like grapes, oranges, olives, fig, oaks, pines, fir, cedar, etc. These are some vegetation which you can find easily in the Mediterranean vegetation. Now come to wildlife. These forests are having golden eagle, spiny mouse, wild goat. Fine. It is all about the wildlife of the Mediterranean vegetation. Fine. लास्ट में हम बात करते हैं कॉन्फिरस फॉरेस्ट की. These are mainly found in the northern hemisphere, Canada, Russia, Norway and Sweden. Characteristics की बात करते हैं. These are also called taiga. It is a Russian word जिसका मतलब होता है pure and untouched. Fine. These trees have straight and tall trees. These forests are basically straight and have tall trees. Their woods is used to make paper, matches, furniture, etc. Let's have a look of vegetation of the coniferous forest. यहाँ पर मिलते हैं larch, fir, spruce, pine, cedar, etc. Come to wildlife. यहाँ पर होता है larch. This animal we called it larch. It's fir. ये होता है हमारा I think polar bear. And we called it silver fox. Here we called it sable and it's caribou. ठीक है, ये है आपकी कुछ वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फिरस फॉरेस्ट में मिलती हैं. फाइन. सो क्लास इट इज़ ऑल अबाउट फॉरेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में और श्रब्स के बारे में. और अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो आपको कोई भी फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ की वाइल्ड लाइफ, वहाँ की वेजिटेशन इस चैप्टर में से पूछी जा सकती हैं. सो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू ऑल दिस वीडियो फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट द ऑल फॉरेस्ट. टिल देन प्लीज़ बी सेफ एंड थैंक यू.